Hello everyone, welcome to the Political Science tutorial. This is the one place to learn everything about political science. This channel will help you all with all the concepts of political science as well as theories in both English and Hindi. So, spread a word regarding this channel. So, in this tutorial, we are going to talk about functions of political parties. And here I have listed out 9 most important functions which every political party has to perform if they want to be in the real politics. आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं functions of political parties. So we have the first function that they nominate candidates during elections. Yes, very true that every political parties, the very first function of being a political party is that you must nominate your candidate as and when the elections are being called upon. Every political party has to nominate so that they reach out to the people, they contest election, and as and when they win the election, they can always form their government at the center. जो सबसे पहला फंक्शंस आता है पॉलिटिकल पार्टी का वो है कि उन्हें हमेशा अपने जो कैंडिडेट रहते हैं इलेक्शन के लिए वो उनको नॉमिनेट करने पड़ते हैं और ये हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को करना ही पड़ता है क्योंकि अगर वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट नहीं करेंगे तो फिर वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट विन द इलेक्शन और वो अपना सरकार नहीं बना सकते। सो देयरफॉर द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज दैट दे मस्ट नॉमिनेट कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शंस। Moving on to the point number 2, they campaign to obtain support for their candidates. Very important. So in fact this is a continuation point from the point number 1. Every political party here, once they nominate their candidate, they have to go back to the public, whatever the timeline they have before the actual voting takes place. They have to campaign for that particular candidate. They have to ask people to vote that particular candidate on behalf of that particular party, because if they don't go for a campaign and if they just list out their candidate, they just announce that so and so person will contest from so and so constituency, and if they don't campaign then obviously they will miss out that very important opportunity to reach out to those voters, because campaign is a very important phase before the election. This is the time when they promise, when they go back to the public, when they make some awareness about the policies, they make various promises altogether. So therefore this campaign is very important to win the heart and minds of the voter in order to get them enough support for their own candidate, and therefore campaign is another very important function of political party. दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये है कि एक बार उनका कैंडिडेट नॉमिनेट होने के बाद उनको उस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए कैंपेन लॉन्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैंपेन आप नहीं करोगे तो वोटर्स को पता भी नहीं लगेगा कि यार कौन से पार्टी का कौन बंदा इलेक्शन में खड़ा है या कौन से पार्टी का कौन बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, उनके विचार क्या है, उनके पॉलिसीज़ क्या है, उनके प्रॉमिसेस क्या है, अगर वो पावर में आते तो वो क्या करेंगे। तो ये सारी जो बातें रहती है वो वोटर्स को पता होनी चाहिए। अगर उस वोटर को पता नहीं है तो वोटर उस कैंडिडेट को कभी भी अपना मत नहीं देगा, अपना वोट नहीं देगा। और इसीलिए ये जो अवेयरनेस के लिए जो अवेयरनेस करने की जो ज़रूरत होती है वो पूरा अवेयरनेस उस कैंपेन के दौरान होता है जो जस्ट इलेक्शन से पहले होता है। और इसीलिए हर एक पार्टी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस रहता है कि एक बार कैंडिडेट नॉमिनेट हो गया तो उसके बाद
उन्हें उस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाना चाहिए, और उनका कैंपेन अगर अच्छा रहा, इफ़ दे एबल टू कनेक्ट to the last of the person in that particular constituency, then obviously it will benefit that particular political party. So this is about the second very important function. Moving on to point number 3, the third very important functions of political parties, that they place objectives and program before the voters. Very important. So in fact, these points are continuing to my argument which I just gave you in point number 1 as well as in 2, that here the most very important function is that they have to list out their programs for the voters. They have to list out their objectives. Basically they have to release their manifesto. Every party does this. Every party promises various things. They promises a lot of programs for the common man, so that they influence, so they impress voters, and voters in turn will vote for that particular party if that particular party talks about their objectives, talks about their issues in the society, if they talk about problem which people are facing, and if they give some suggestions. If they come into the power, then they will do this for the voters. Then obviously voters somewhere down the line will think about these programs, and he or she would love to give a chance to that particular party. And therefore the third very important functions of political parties, that they must place their programs, objectives in the manifesto before the voters, and then let voters decide whom they want to bring in power. थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आफ्टर नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट, आफ्टर कैंपेनिंग, इज़ दैट दे मस्ट प्लेस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स. मतलब उन्हें अपना जो मैनिफेस्टो है वो लोगों के बीच में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता लगे कि फलाना पार्टी ये करेगी, अगर वो पावर में आती है तो इनके ये ऑब्जेक्टिव्स है, इनके ये प्रोग्राम्स है. अगर वो फलाना पार्टी अगर वोटर्स को इम्प्रेस कर पाती है तो ऑब्वियसली वोटर्स उस पार्टी को अपना महत्वपूर्ण और बहुत मूल्य मतदान या बहुत मूल्य वोट उस पार्टी को देके उस पार्टी को पावर में ला सकती है. तो इसीलिए अगर आपको वोटर्स के बीच में जाना है, वोटर्स से कनेक्ट होना है, तो आपका मैनिफेस्टो लिखित में होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तभी जाके जो वोटर रहता है वो किसी पार्टी को अपना वोट दे सकता है. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट दोज parties which secures majority, they always forms the government. Very true. So in short, once we have a nominated candidate, once we have a campaign, once we put forward the program or the manifesto before the voters, and then the election takes place, the next very important functions of political parties is that if they manage to secure that majority, if any political party in election, in a democratic election, manage to form or manage to get that majority, then obviously they will be the first people, they will be the first party to form the government. And this is what you see around the world. Wherever we have a democracy, that always the majority party should be given a chance to form the government. And once they form the government, then obviously it depends on them that whether they implement all their programs or whether they bring their objectives before the public or not, that comes later. But the fourth very important functions for any political party is that once they get majority, once they secure that majority, they must form the government, and this government should work for the welfare of the people. चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रहता है वो है कि एक बार इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पा लेती है, अगर उसको मेजॉरिटी सीट्स मिलती है, देन उसको अपनी सरकार बनाने का पूरा हक मिलता है. और ये जो सिस्टम है ये आपको
सारे दुनिया में जहाँ पर भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती हो आपको वहाँ पर मिलेगा। और ये फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है जहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी को फर्स्ट प्रोविजन मिलता है, फर्स्ट बेनिफिट मिलता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ देयर आर इवन एक्सेप्शनल ways we have seen in and around democracy that sometimes political parties fail to get majority। तो जब वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब वी हैव समथिंग कॉल्ड अलायंसेस। सो 4-5 पार्टियाँ मिलती है, कभी कभी 10 पार्टियाँ आएंगी, कभी कभी 20 भी आ सकती है। जैसे इन इंडिया वी हैव अलायंस ऑफ 18 parties, 20 parties, they all come together because they have something common minimum program। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो अपनी सरकार बनाती है और बाद में सरकार को चलाती है। हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं इंडिया में, स्पेशली वेदर इट इज़ UPA 1, UPA 2 और इवन इट इज़ NDA ड्यूरिंग लेट Shri Atal Bihari Vajpayee government or even for that matter current government। So we have this alliance forming the government। Now this is another exception। सो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक पार्टी को अगर उनको सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी मिलती है तो उनको अपना सरकार बनाने का अधिकार है और ये उनका चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, दोज हु कैनॉट सिक्योर द मेजॉरिटी एंड दोज हु आर नॉट इन द पावर दे ऑलवेज फॉर्म द ओपोजिशन एंड बाय फॉर्मिंग द ओपोजिशन दे मस्ट कीप अ कॉन्स्टेंट चेक on the government। This is another very important functions for those political parties which do not possess or which do not secure the majority। Now we have to understand in the framework of a democracy and a free and fair election that in democracy hundreds of party contest elections, especially in a country like India we have hundreds of parties। In fact we have thousands of parties which are registered under the Election Commission of India, but all of them doesn't contest election। But those who are contesting election, sometimes a situation comes that some forms the government, some doesn't form the government। So those who doesn't have the majority, what are they supposed to do? They also have a very important role to play in a democracy, and here their function is that they have to form a opposition party। Therefore the work which opposition party does is that they have to keep constantly check on the government। That is the job of opposition party। Opposition party cannot be just for a namesake that yes we are in opposition party so we'll just sit there and we'll do nothing। It cannot be। Opposition party has to keep their eyes open, keep their ears open, because they works as a watchdog। They are supposed to keep a watch and a checks on the forming and the functioning of the government, because whenever the ruling party makes any mistakes then it is the opposition party who is supposed to question them। It is not just about making mistakes and questioning them, but whenever a nation needs to take certain decision for the safety of the security, national interest, and by and large the interest of every citizen, therefore opposition party must work in coordination with ruling party and vice versa, because end of the day whether you are in a ruling party or you are in an opposition party you are the public representative, and therefore you must always take the issues of the public first and rest of the things later। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी का रहता है वो है कि जब कोई भी पार्टी अगर मेजॉरिटी नहीं पा सकती है तो उस सिचुएशन में वो अपना ओपोजिशन फॉर्म उसको बनाना पड़ता है। दे हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ ओपोजिशन पार्टी, और जब वो ओपोजिशन में बैठती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है डेमोक्रेसी को स्मूथली फंक्शन करने के लिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पावर विच ओपोजिशन पार्टी हैज़ दैट उनको हमेशा सरकार के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। सरकार क्या क्या पॉलिसी ला रही है, सरकार कहाँ कहाँ पर शॉर्टफॉल महसूस करती है। इफ़ गवर्नमेंट ऑफ द डे अगर कोई मिस्टेक करती है, उसको कुछ अगर सलाह चाहिए, अगर उसको कुछ ओपिनियन चाहिए, तो वो पूरा जो काम रहता है वो ओपोजिशन का रहता है, क्योंकि ओपोजिशन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओपोजिशन पार्टी का मतलब ये नहीं कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है,
It is not. Even if in opposition, if there are one party, even in opposition there are two people who are sitting, they represents the opinion of the public. Therefore उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए. इन शॉर्ट हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल रन करना है तो वो सिर्फ रूलिंग पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ओपोजिशन पार्टी का भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए किसी भी पार्टी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, अगर वो अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें ओपोजिशन में बैठ के लोगों के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल हु हैव वोटेड देम इन द असेंबली और या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और या फिर पार्लियामेंट में, तो उनको अपना कर्तव्य करना पड़ता है. एंड दिस इज़ व्हाट द फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. Moving on to point number 6, they form opposition when they are in minority. It is again a continuation point that, as I said, whichever party which doesn't form the majority, obviously they form the opposition party in minority because they are in minority and therefore they cannot form the government. And as I said, when they are in minority, they are supposed to work together for the welfare of the country. 6 जो बहुत important functions है, इनफैक्ट ये कंटिन्यूएशन पॉइंट है ऑफ पॉइंट नंबर 5. मतलब जो भी मैंने अभी पॉइंट नंबर 5 में बोला है वही यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 को भी वो वैलिडेट करता है. और यहाँ पर ये बात हमें समझनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टी मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पाती है तो ऑटोमेटिकली वो माइनॉरिटीज़ में पड़ जाती है, और माइनॉरिटी होने के कारण उसको हमेशा ओपोजिशन में बैठना पड़ता है. और जैसे मैंने बोला, ऑपोजिशन में बैठकर उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल दे आर सपोज टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. और इसीलिए 6th पॉइंट दैट दे फॉर्म ओपोजिशन व्हेन दे आर इन माइनॉरिटी, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट they educate people and help in formulating and shaping public opinion. Very important. All these political parties, wherever they are, from north, south, east, west, or whichever ideology they may belongs to, the foremost very important functions of this political party is to educate people regarding the issues in the country. They are supposed to help people in formulating their own opinion, because every time when political party takes certain issues on behalf of the public, behalf of the state, or on behalf of the nation, then they are also helping to shape public opinion. If you go across the entire country of India, we have so many issues, and these issues are not of just 2020 issues. We have issues which have been piled up for last 70 years of our independence. We still are struggling when it comes to our education system. We are still struggling when it comes to our poverty. We are still struggling when it comes to our labor issues, migrant issues. There are hell number of issues including the national security. So these political parties supposed to educate people that what we stand for. They are supposed to help people to form their opinion, and therefore that opinion matters a lot to garner the support from the public for the government. 7वां महत्वपूर्ण फंक्शंस जो है पॉलिटिकल पार्टी का, ये बेसिकली सिंपल है. ये कहता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, उसका एक फंक्शंस रहता है, और वो फंक्शंस हैं कि वो लोगों के बीच में जाए और लोगों के बीच में पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में उनको अवगत कराए, उनको उस इश्यूज़ के बारे में एडुकेट करे. सिर्फ एडुकेट ही नहीं करना है कि बल्कि उनको बहुत इन्फॉर्मेशन देके उनका जो ओपिनियन रहता है वो ओपिनियन फॉर्म करने में उनकी मदद करनी चाहिए. क्योंकि अगर कभी भी सरकार को ज़रूरत पड़े किसी इश्यूज़ को फेस करने के लिए, तब सबसे ज़्यादा सरकार को जो सपोर्ट लगता है वो लोगों का लगता है. अगर सरकार के पीछे अगर उसके सिटीजन्स खड़े रहते हैं तो जो गवर्नमेंट है उस देश की या उस स्टेट की, दे कैन फेस एनी इश्यूज़ विदाउट हैविंग मच बॉदर्ड अबाउट. और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी को
अपने लोगों के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में उनको अवगत कराना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनका जो ओपिनियन है वो उसको फॉर्म करने के लिए मदद करनी चाहिए। और अंत में जब कोई ओपिनियन बिल्डअप होता है रिगार्डिंग एनी इश्यूज़, then that will always going to benefit the government and that particular political party. So this is the 7th very important functions of political party. Moving on to point number 8, political parties always help to articulate people's demand and convey them to the government. Very important. See, end of the day we have to remember that political parties are nothing but a form of a representation, because whichever political party you may belong to or whichever political ideology you may practice, end of the day you are helping people to articulate their demand. We have, as I said, we have lot of issues. Recently we have seen how thousands and lakhs of migrants had to travel by themselves, and somewhere our administration failed them. Now who are going to talk about these migrants? Who are going to represent these migrants? And therefore we have political parties which help these people to understand their issues, and once they understand their issues they convey those issues to the government. In short, any public representative wherever he is from, if he has issues in his constituency, he should talk to those people. On behalf of his own political party, he must talk to the people, understand their issues, let them talk about their own issues, and once you collect their issues, then you must convey that issues to the government, because you are the public representative, and that is what political party is supposed to do as a very important functions of any political parties for that matter. यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि आज के तारीख में हमारे देश में बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमारे देश में नहीं, आप किसी भी डेमोक्रेसी में देखो, हर एक कम्युनिटी का, हर एक रीजन का अपना एक रिजर्वेशन है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लोगों का साथ चाहिए तो आपको उन लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनका जो प्रॉब्लम है वो समझना चाहिए. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हियर दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ मस्ट टॉक टू द पीपल. उनको हमेशा लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों के इश्यूज़ क्या है वो उनसे समझना चाहिए, और एक बार आप उनके इश्यू समझ गए तो आप वो इश्यूज़ ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल एंड ऑन बिहाफ ऑफ योर पार्टी यू कैन टेक इट टू द गवर्नमेंट. और बाद में सरकार को वो बातें सुननी ही पड़ेगी और माननी ही पड़ेगी. एंड दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दैट दे मस्ट रिप्रेजेंट द पीपल and convey people's issues to the government. And the last very important functions of political parties is that they provide a linkage between the people and the government institutions. Very simple, that all the political parties finally works like a bridge between the people and the institutions, because sometimes people don't have the direct contact in the government institutions. So therefore what they do, they elect you, and you as a political party, you as a political representative always should convey their problem to the government, and therefore every political party works like a bridge. और अंत में यही कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का, ये सिंपल है. यहाँ पर ये समझना है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक लिंक की तरह काम करना चाहिए, एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करना चाहिए. इनफैक्ट हर एक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहते हैं वो एक ब्रिज बनता है लोगों के बीच और सरकार के बीच, क्योंकि बहुत से जो आम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके बिहाफ पे उस पॉलिटिकल पार्टी को उनके इश्यूज सरकार के सामने लाना पड़ता है. सो इसीलिए द नाइन्थ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज दैट पॉलिटिकल पार्टी मस्ट वर्क एज अ ब्रिज, एज अ पुल between people
and the government institutions. So I hope you have understood these all 9 points about the functions of political parties. और जाते जाते ये भी बोल दूंगा कि please subscribe to my channel, share these videos with all your friends, let the benefits of these tutorials reach out to the maximum students as well as maximum people who really want to learn and understand the concept, theories, all about political science. So thank you very much for watching this. I'll see you soon in next tutorial. Till then, take care.